महाराष्ट्र की सियासत में मुतनाज़ा रिमार्क को लेकर इल्ज़ामात पुलिस शिकायतों का सिलसिला जारी है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर सुनील रावत की तरफ से मुंबा देवी नशिस्त के उम्मीदवार शाइना के खिलाफ बकरी का मुबैना रिमार्क किए जाने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। शाइना ने कहा कि सुनील रावत ने शर्मनाक रिमार्क किया है, हमें बकरी और माल जैसे इल्ज़ामात से खिताब किया गया। ये लोग ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम करने से कासिर हैं। कांग्रेस भी इस मामले पर खामोश है, उसे अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। This is the most regressive comment coming from Sunil Raut. On one hand, they call us Bakri. On one hand, they used words like Mal. Look at the ideology, look at the mind, and look at the thought process. On the one hand, you have a Prime Minister that respects women and has shown it time and again. You have a Chief Minister that has empowered us with Ladki Behna. And there you have the Mahavinash Agadi, where you have somebody referring to us as objects, somebody using words like Bakri, somebody using words like Mal. I think the time has come for the women of Maharashtra to wake up against this insensitive commentary, because obviously the Mahavinash Agadi is against women's dignity. And the Congress party is absolutely silent. Priyanka Gandhi says, ladki hoon, lad sakti hoon. Kiske liye lad rahe hain aap? Where is your voice, and why haven't you reprimanded all your people from your alliance who have disrespected women every single minute? We are not Bakris, we are not Mal, we are the Betis and the Behens of Maharashtra, and we will give a befitting answer on the 20th of November.